मैं I would Zen, suggest कि गाजर का हलवा मंगवाना, गुलाब जामुन. see, he's so rude. Zen ने पता है गुलाब जामुन की भी तारीफ की है मेरी, इसलिए उसको 3 दिए मैंने और तुम्हें मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को गाजर का हलवा हाँ चाहिए. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्यार दोस्ती है. एंड अगर वो हाँ. मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो शायद मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती. Because Correct. when you come home, Dialogue. when you come home, I would really want to come home to my best friend. I have met him also before the show, just once actually. And you know how bad I am with names. तो मुझे नाम याद नहीं था, शक्ल याद थी. The young and talented Reem Sheikh and Akshit joins me today on Bollywood Bubble for their upcoming show Fanaa, Ishq Mein Marjawan. And I'm very excited because obviously the show promises a range of emotions which we hardly get to see on television, right? So welcome to Bollywood Bubble. Firstly, both of you, how are you? You very nice, very good. You tell me, Reem, firstly, because you have played characters on you have been loved for playing Kalyani especially. So when this character came to you, what was your first reaction like why did you say yes to playing be a part of जब पहले स्टोरी सबसे पहले नरेट हुई थी एंड जो पाखी का कैरेक्टर स्केच नरेट हुआ था, the thing that excited me a lot was that she is a very simple girl, जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, everything is going fine, then suddenly this major incident happens in her life and everything just changes. And अभी तो पाखी की लाइफ बहुत स्मूथ और स्लोली अच्छे से चल रही है, but as the story will take shape, काफी emotions मुझे as an actor portray करने का मौका मिला. I always try my best to pick up such characters जहाँ पे मुझे different layers play करने का मौका मिले. character एक ही तरह stretch ना होता जाए, but काफी character shades आते हैं, layers आते हैं, काफी emotions आते हैं characters में. So this is something which really that also excited me about Kalyani and also this character that I'm playing. And Pakhi ka belief in the power of universe, and as I am a firm believer in the power of universe, so I could connect to the character. As I heard this, that she is a firm believer in the power of universe and she feels that she's universe's favorite child. So एक immediate connect मुझे तभी feel हुआ था character के साथ, because मैं personally वैसी हूँ. So that is something, and also Deepti ma'am has written the story beautifully. That just excited me so much, and I was just hoping कि हाँ ये show मैं ही करना चाहती हूँ, and things worked out in my favor by like you mentioned, you are universe's sweet child, so good things happen to good people, right? Akshit, for you, because इश्क में मरजावा जब भी हम बात करते हैं ये शो के बारे में, so one of the major characters is actually the entire hero as well, because he is the one who is that obsessed. I mean, kahin na kahin, he is driving that story, right? So what was your reason for saying yes? Because obviously kabhi kahin pe apprehension tha ki what if, because eventually wo ek, as an actor you always want a certain screen time on in a show. Did you ever even think about it? ये ख्यालात भी आए जब ये ऑफर हुआ आपको? Obviously I thought about it, आया ये चीज मेरे दिमाग में, but उससे पहले चीजें क्या चल रही थी. I was offered 2 other shows जिसकी story line same थी जो मैं पहले कर रहा था. I did Shubharam, then I did Lakshmi Ghara. I played that very good guy, bhola bhala, mama's boy kind of guy. But this time I wanted to do something else. And जितना मैंने पिछले 1-2 साल में देखा है, अगर you have to आजकल हम वेब में जो देख रहे हैं कि there are so many characters, वहाँ पे आप एक ऐसे lead नहीं रह सकते हो. And when I got to know about this show, Deepti ma'am called me and I was, she told me everything about the show, about Agastya's character, about Pakhi, about Ishan. And the first question was my mind was this only, is this a character or is this one of the leads? So she clearly told me that entirely there. The story is totally on 3 of you guys. So I was like, okay. But after I heard the whole story, I was very, interested, and then I got to know about the production house, about the channel, about my co-stars. When I got to know that Zain and Reem is playing, I was like, this is a good opportunity for me. And this time पे मुझे, screen time, मेरे दिमाग में time वाली बात नहीं आई थी. बस मुझे ये था कि वो importance कम ना हो जाए. But story सुनने के बाद and
मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार दिस इज अ गुड थिंग फॉर मी एंड ये कुछ डिफरेंट है, न्यू एज रोमांटिक थ्रिलर है, एक डार्क लव स्टोरी, मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ इसके साथ, और मैं अगर अच्छा करूंगा तो ऑडियंस को पसंद आएगा, तो अपने आप ज्यादा दिखूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं थी मुझे. बट व्हेन आई मेट दीज गाइज आई वाज लाइक ओके आई मेड अ गुड डिसीजन and I am not going to regret it. I'm pretty sure. I can assure you that, because Reem is a fun person to be with. Zain again is amazing to be with as well. But Reem, आप मुझे बताइए, when did you meet Zain for the first time, or did you like both Akshit and Zain for the first time, or did you know them from before? Zain से तो 2-3 बार मिली हूँ मैं. We have a lot of common friends. तो मुझे पहले से पता था that he's very humorous, he's a funny person, and he gives me good vibes. So right. पहली बार नहीं मिली थी मैं. इनफैक्ट जब हम मिले भी थे for the first time mock के time, script reading के time, we were quite nice to each other because पहले से जानते थे हम. And I have met him also before the show, just once actually. And you know how bad I am with names. तो मुझे नाम याद नहीं था, शक्ल याद थी. पहली बार दूसरी बार जब शो के रिगार्डिंग मैं मिली थी, आई मेट हिम एट द ऑफिस. हमारा एक छोटा सा मॉक हुआ था, एंड दैट टाइम ही सीम्ड वेरी सीरियस एंड रिजर्व्ड एंड a sort of an introvert in a positive way, nothing in negative. But actually पता है सबसे बेस्ट पार्ट हमारे शो की और हमारी पूरी टीम की यही है that even though it's a new show, but लगा नहीं, एक भी बार नहीं लगा that हम किसी नई टीम के साथ काम कर रहे हैं, because 1-2 दिन के अंदर ही we were nice friends and we all gelled up pretty well and we got comfortable with each other really well. वो जो एक awkwardness होती है शुरुआत के दिनों की, आई नहीं actually. And these two are amazing. Obviously, because Reem is getting your gulab jamuns and दाल आप तक खबर पहुंच गई है. These things. Zain told me, and I was like, listen, I also want it. And he's like, no, I'm not sure. I was like, what is this doing behavior? I also want it. Yes, अगर मतलब I would suggest गाजर का हलवा मंगवाना, गुलाब जामुन. See, he's so rude. Zain ने पता है गुलाब जामुन की भी तारीफ की है मेरी, इसलिए उसको 3 दिए मैंने, तुम्हें मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को गाजर का हलवा. हाँ ठीक है. No, next time I'm giving it to Bhavna. मैं तो आ रही हूँ अब, मैं स्पेशली सिर्फ वो खाने के लिए आ रही हूँ अब. But Akshit, for you, what was the what did you bond over with them? Because they are obviously, I mean, I know them a little more than what I know of you off screen. So what was it that you bonded over with them? Because I know them as people, so I know कि वो लोग तो ढल जाएंगे types, they are that kind of people. But what was it? हाँ मतलब सब कुछ, food हो, music हो, सब पे. But आपके लिए bonding factor क्या था? No, actually I'm also very flexible. जो भी सामने वाला इंसान जिस भी तरीके से मुझे vibe दे रहा होता, I can totally adjust. That is me. But मुझे उससे पहले क्या था, according to my previous experience, मैं काफी सोच रहा था because they are far more experienced than me and काफी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी. तो when we started shooting, मेरे दिमाग में बहुत कुछ था and I was kind of conscious कि क्या होने वाला है. But when I met Zain also, Reem से मैं एक बार पहले मिला हुआ था, जैसे भी था everything was new. But जब मैं मिला, as I said, कुछ ज्यादा कुछ awkward type लगा नहीं, and मुझे लग रहा था कि थोड़े से tantrums या attitude लगेगा दोनों के साइड से, but to my surprise दोनों के साइड से कुछ भी नहीं लगा. And I was like okay, जितना मैं सोच रहा था मुझे नहीं सोचना चाहिए and मुझे भी comfortable हो जाना चाहिए. तो जब मुझे अच्छी सी vibe सामने से आती है, then naturally मेरी साइड से भी एक comfortable side निकल के आती है. Of course. वही हो गया उसके बाद. But tell me, because the show deals with something which is so serious, intense, at the same time entertaining, because यहाँ पे हम love की बात कर रहे हैं, the extreme level to which a person can go when in love, the stalking, obsession, all of this, right? So as Paki, I don't know if your character has come to a point अभी जहाँ उनको वो deal करना पड़ रहा है वो obsession का, but are you mentally prepared, because it is not an easy role to pull off. जब मुझे स्टोरी सुनाई गई थी तो फिर मुझे मैं तभी से बहुत एक्साइटेड हो गई थी for this track to get in,
क्योंकि मुझे पता था that that will be the time that is going to be a little challenging for me, because see हम इतना creep out तब होता है जब हमें ऐसा लगता है कि what some stranger is looking at me, if I'm walking on the street, if I'm driving, कि ये बाइक वाला इतने टाइम से मेरे पीछे क्यों आ रहा है, हम stranger को लेके इतने creep out हो जाते हैं. What will be the reaction of a girl जिसका 7 साल पुराना दोस्त stalker निकलता है, जिसका 7 साल पुराना दोस्त इतना obsessive निकलता है. So there is a lot as Pakhi that I have to portray. I as an actor have this challenge of portraying this character, and that is very exciting for me because I मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब मेरे पास सीन में इतने सारे इमोशंस होते हैं पोर्ट्रे करने के लिए. So I'm very looking forward to that part when we get to it, and uske alawa bhi, trust me Bhavna, there's a lot that the story has to offer, and the way we are shooting. So Reem, because this is about love, it is a love story, I want to know what is your definition of love, and how much, I mean on a scale of 1 to 10, अगर मैं आपको पूछूं आपका obsession level क्या हो सकता है in when you are in love, what would that be? When I feel that जब when I care for someone, मैं care बहुत करती हूँ, and प्यार में care होना बहुत जरूरी होता है. But my definition of love is a little cliched. I feel that आपके partner के साथ दोस्ती होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, because प्यार दोस्ती है. प्यार दोस्ती है, या as I said, मेरी लाइन थोड़ी क्लीशे है, प्यार दोस्ती है. एंड अगर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो शायद मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती, बिकॉज correct. when you come home, I would really want to come home to my best friend जो बैठेगा, मेरी बकबक सुनेगा, मेरी बकवास सुनेगा कि how my day went or how good or bad it was. And it's very important to share friendship in any relationship, be it your relationship with your parents or be it your relationship with your partner. एक वो जो दोस्ती का comfort होता है ना, that is different level. Like मतलब मैंने खुद ये realize किया है that जब so called ऐसा लगा था मुझे कि मुझे प्यार हो गया, I used to actually differentiate that कि यार मैं जब इस इंसान के साथ रहती हूँ तब तो I want to look perfectly fine and nice and pretty and hot, but when I am with my friend I am tying a juda and I'm in my night clothes and I just don't care, I'm carefree, and and I realized that प्यार से ज्यादा मैं दोस्ती में ज्यादा I was more of myself, I was more comfortable in दोस्ती than being with the person that I thought that I was in love with. तो फिर तब I think I realized that कि ये जो comfort हम दोस्ती में शेयर करते हैं ना, ये प्यार में होना बहुत जरूरी होता है. और trust me, अगर आपके रिश्ते में दोस्ती अच्छी है ना तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, because हम अपने लाइफ से दोस्त खोने से बहुत डरते हैं. be it स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं तो ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द होता है, जब कॉलेज के दोस्त छूट जाते हैं तो ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द होता है. So yeah, I think प्यार में दोस्ती होना काफी जरूरी है. Wow, I mean, I like that explanation a lot more than कुछ कुछ होता है also. सिर्फ एक line के अंदर खत्म कर दिया था. Akshit, for you, how do you define love? Yeah, to be very honest, I have no idea actually. I haven't experienced that kind of love. In terms of love, maybe पहली नजर वाला प्यार होता है, या फ्रेंडशिप के बाद आपको रियलाइज होता है कि यही प्यार था, या मे बी एक प्यार होने के बाद आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है. आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, सो आई वोंट कमेंट ऑन इट बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया भी है तो मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इन रियल लाइफ इन चीजों को लेके. सो बट एज रीम सेड, जो उसने चीजें बोली वो काफी लॉजिकल लगती हैं कि आप जब तक सामने वाले के साथ कंफर्टेबल नहीं हो एंड आप अपनी मन से चीजें नहीं बोल रहे हो, आपको कोई कुछ पसंद भी आ रहा नहीं भी पसंद आ रहा सामने वाले इंसान के बारे में, अगर आप उसको मुंह पे नहीं बोल पा रहे हो देन उसमें आप उसके साथ पूरी लाइफ कैसे बिता पाओगे. सो सीखने को मिला आज मुझे कुछ रीम से. I love that explanation, and I know that she loves all these kind of films. I mean, that kind of films also she watches, so definitely. So now, because we don't have a lot of time, lastly, I want to know from both of you. Again, because the show also deals with obsession, stalking, and all of that, you guys are prone to fan love so much. But of course, fans can also, I mean, there's always a different side to it as well, when it can get dirty and harsh as well, right? Did you ever face something like that which sort of like scared you?
honestly, this is one thing that I love about my fans, that उनको उनका दायरा पता है, उनको उनकी लिमिट पता है, and they respect my personal life and my personal time. अगर Instagram पे कोई और मेरी personal life को लेके कुछ कह रहा होता है, so my fans, they stand up for it, and they make sure that मेरी personal life के बारे में कोई कुछ बकवास नहीं कर रहा, या कोई कुछ कह नहीं रहा. So that way, a big kissy to all the fans, because they really respect me and my personal life. But एक बार ऐसा हुआ था that coffee shop पे मैं गई थी, 3-4 लोग थे हम, and उसके बारे में हमने कोई story वगैरह post नहीं की थी, like how we usually post on Instagram, वैसे हमने post नहीं किया था, and suddenly I come home and I see that मेरे comment section में people are talking about it. And I was like, how did they even come to know? Like, I didn't post any story, और हम में से किसी एक ने भी story post नहीं की कि पीछे background में दिख गया, and people were actually spilling out details कि ये इसके साथ आया था, वो इसके साथ आई थी, और फिर वो चौथा बंदा आया था, फिर पांचवा इंसान. They were actually discussing that, and I was just wondering that how is this possible? तो वो एक बार हुआ, but दोबारा ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं. So lucky, I've been lucky in that case. Yeah. अक्षत, कभी हुआ है ऐसा कोई? ऐसा भी हुआ है कि किसी ने कुछ गलत कमेंट किया तो 3-4 फैंस ने मिलकर उसकी बहुत बजाई कि हुआ यू टू से ऑल दिस. एंड दिस वन थिंग हैपेंड अ व्हाइल बैक. एक फैन ने 2 आईडीज क्रिएट की, एक अपने फैन पेज के नाम से, एक मेरे रियल नेम से, मेरी सेम प्रोफाइल के साथ, एंड शी स्टार्टेड चैटिंग विद बोथ द प्रोफाइल्स, दिखाने के लिए कि मैं उसकी फैन पेज से बात कर रहा हूँ. And she started sending those screenshots to all of my friends. तो जिन भी friends को मैं reply back करता हूँ comment में, और my friends, उनको सबको भेज के she started telling them कि see, Akshit talks to me every day, he gave me his number also, but I misplaced it, please उसका number दे दो. So that was very creepy, and I had to tell everyone कि no, this is not me. तो वहाँ पे भी I kept my patience कि मैंने कुछ बोला नहीं, but that was very creepy. तो हो जाता है, but otherwise मैक्सिमम ऑफ द टाइम प्यार ही प्यार मिला है. ऐसे हर किसी ने एक प्राइवेसी की वो किया, उन्होंने रिस्पेक्ट की है प्राइवेसी. True. So thank you, both of you. I hope that the show gets enough love. I hope that people love it as much as y'all love doing the show. And I am really looking forward to seeing all of you in different avatars, because I think this is probably the first time y'all are also playing something. You're a part of a show which is that intense. So best of luck, Reem. I'm going to come and see you very, very soon. Thank you, both of you, and all the very best. Thank you so much. Bye.